Yes, could you please repeat? Okay, could you all? Aisha, please mute yourself. Thank you so much. Okay, assalamu alaikum everyone. Can you all please see my screen at the moment? Could you all please see the screen at the moment? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Okay. Yes, ma'am. Today we have a second day of our listening session. Okay, let me just give a quick review of yesterday class. Yesterday I discussed with you some nuts and bolts about listening section, which is the first part of your IELTS test. Okay, listening is basically same for academic and general training students. So will be your first test when you appear in IELTS test. First one is about the duration. It has 40 minutes duration in the test, which includes 30 minutes for listening and 10 minutes for transferring the answers to answer sheet. You need to use pencil only because pen is not allowed. So you can erase your mistakes while answering the question. The entire test is being taken while listening. Okay, it's not post listening. So you will listen to the recorded sessions, and you need to answer then and there when recording is being played. There are 4 sections in listening with 40 questions. Each section has 10 questions along with proper instructions and questions. You will be given time to read the instruction and question before the listening starts. Listening is played once only, so you have to be very alert during the entire part, so you may not miss any one of the points. Okay. In listening, we have 2 different kinds of listening. One is called conversation and the other is called monologue, means you are expected to listen single speaker in that. Okay? So as you have 4 sections, section 1, which is conversation. Section 2 is monologue, single speaker speaks on the topic. Then we have section 3, in which again you will have a conversation, and then we at the end have a monologue. Okay? So it just goes like that: conversation, monologue, conversation, and monologue. Now, whenever we are, yes, any question? Okay. As we have 4 sections, so first 2 sections are related to social context. The first would be a conversation and another would be a single person speaks about any local speech or any talk about the local facilities. Section 3 and 4 are related to educational and training context. So you are expected to hear a conversation between tutor and students. Okay. It can be between 2 students discussing their marketing assignment. Section 4 would be a monologue on academic subject, or it could be a university lecture, anything related to training and educational context. Okay? Listening is not difficult unless until you pay full attention with complete understanding. If you are weak in understanding, then listening becomes difficult. Otherwise, listening is quite easy. All right. Let's start with having a review of few tasks. In listening, the first aspect that you have in front of your listening paper, that would be instruction. पहला part क्या आता है? Instruction का part सबसे first होता है. Instruction means that you are supposed to write how many number of words or number on the question paper, like in answer. Okay? So let's say first section has 1 to 10 questions. It is subdivided into 2 parts. First aspect, question 1 to 4. Okay? Then there will be a pause. You will be asked, given 30 seconds to read questions 6 to 10. ठीक है? फिर आपसे कहेंगे भाई 6 to 10 पढ़े. तो इसमें क्या होता है आपके पास? You do have time to read questions 30 seconds before and after both. ठीक है? Review का भी time होता है और preview का भी time है. So before that you can read the question. When the listening is over, you are asked that you have 30 seconds to check all the answers. Okay? Now, if you are done with all questions, it's better to save time and move to the next section,
इन दी लिस्टिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने वर्ड्स और नंबर रिक्वायर्ड है। सो इन दिस पार्ट, हाउ डू वी नो इफ द क्वेश्चन आस्क यू नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है, उसका क्या मतलब है, 3 वर्ड्स या नंबर से ज्यादा नहीं लिखते हैं। दिस मीन्स दैट यू मे आंसर विद इन 2 वर्ड्स और नंबर, ठीक है, और 3 वर्ड्स और एनी वन नंबर, और यू मे आंसर इन 1 वर्ड और नंबर। और अगर नंबर नहीं है, सिर्फ वर्ड्स दिए, कोई 2 वर्ड है तो 2 वर्ड में भी आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे कह रहे हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स, दिस मीन्स के दैट फिर आप 3 में नहीं आंसर कर सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जितनी लिमिट है उसी में आंसर करना है। इफ इट इज सेइंग नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो 3 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करने, तो कहीं आप 2 वर्ड्स भी यूज करेंगे, कहीं 2 भी यूज 3 भी यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गेट। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। If spelling is wrong, answer would be wrong. So if you are writing any contracted words, this will not be tested. But if you're writing compound word, let's say policeman, okay, so that is considered as single word. Okay, somewhere where you are uh, expected to listen any name of a person or place, so initial उसका capital होगा। Plural singular का ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई चीज plural कह रहे हैं word, so you need to write s or es in that word. कहीं वो singular है तो singular ही लिखना है आपने। And in case if speaker is saying that in the listening के कोई ऐसा वर्ड उन्होंने दिया हुआ है के साथ में नंबर भी है, तो नंबर और वर्ड साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको नंबर और वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इट विल मेक लूज योर मार्क्स लेटर। अच्छा, लिस्टिंग में डिफरेंट टाइप्स की टास्क होती हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जस्ट क्विकली हैव अ लुक। कल हमने फॉर्म फिल किया था क्लास में, नोट्स कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन अटेंड किया था। टुडे आई विल फोकस ऑन डायग्राम और मैप। आज मैं मैप पे फोकस करूंगी, ठीक है। हाउ टू बेसिकली सॉल्व a map or diagram if you get in the exam. So there are 7 types of tasks, which includes form, note, and table completion, plan, map or diagram labeling, multiple choice questions, matching, flow chart or summary completion, sentence completion or short answer questions. So we discussed yesterday form completion. Form completion में क्या था कि आपको एक फॉर्म लाइक नोट्स कंप्लीशन। नोट्स कंप्लीशन में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन होगी एंड यू विल जस्ट फिल द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग द स्पीकर द वे ही और शी इज गाइडिंग यू। सो दिस वाज द सेक्शन अबाउट नोट्स ऑन सोशल प्रोग्राम। एक एग्जांपल ऑलरेडी डन है आपके लिए, एंड हियर इट इज रिटन नंबर ऑफ ट्रिप्स पर मंथ। तो सोशल प्रोग्राम के बारे में हम सॉल्व कैसे करेंगे, व्हेन यू हैव 30 सेकेंड्स यू हैव टाइम टू रीड ऑल द क्वेश्चंस। तो आप क्या करेंगे, क्विकली कीवर्ड्स मार्क कर लें हर क्वेश्चन के। पहले क्या पॉइंट है, विजिट्स प्लेसेस। तो फर्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स पर मंथ पे, तो हम पहले लिखेंगे पर मंथ, लेट्स से वहां कहेंगे 5। ये एक ऑलरेडी आपके लिए एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, पेपर में भी होता है, एक आंसर एग्जाम्पल का देते हैं वो फर्स्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वुड यू अटेम्प्ट। Later they have given places, so visits places which have, so good dash next one, तो जो place वो बताएंगे you would write the name of that place here. Later speaker will talk about the cost, okay, then note special trips organized for group of dash people। तो group of people में उससे पहले वो कोई ना कोई नंबर बताएंगे, more than 10 people, more than 11 people। people ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, more than 11। so 11 किस में लिखेंगे, नंबर में, and more than will be written in words, ठीक है। अच्छा, ट्रैप्स भी होते हैं लिस्टिंग में, कहीं वो आपसे कहें इट्स मोर देन, नो 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 सॉरी, इट्स नॉट मोर देन 12, इट वुड बी मोर देन 15। आई हैव जस्ट लुक एट द शेड्यूल। तो कहीं कहीं वो आपको ट्रैप्स भी देते हैं, पहले गलत कहते हैं, फिर गलत को रेक्टिफाई करते हैं, एंड देन देयरफॉर यू नीड टू लिसन इट केयरफुली। ओके, पैराफ्रेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी लिसनिंग में पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आंसर वो एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, उससे पहला जो कीवर्ड है वो पैराफ्रेजिंग में कहा जाएगा, थोड़ा घुमा के कहते हैं।
let's say a group of people कह रहे हैं, so they may say more than 10 people in a group will join the group, okay, or the trip will be organized for more than 10 people of the group. So group of more than 10 people भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा इसको घुमा के भी कहा जा सकता है, ठीक है. सो आपको किस में फोकस करना होगा, कीवर्ड पे. अब टू रिजर्व अ सीट, अब रिजर्व अ सीट के लिए वो ये नहीं कहेंगे यू हैव टू रिजर्व अ सीट, सिंस इट्स अ कॉन्वर्सेशन, तो आपस में बातचीत चल रही है. So she would say that, how would I reserve the seat? So another speaker would say, you have to sign a name on the dash 3 days ahead. All right. एडवांस का वर्ड निकाला, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, फ्रेज 3 days ahead. So ahead का मतलब है in advance. All right. Sign the name on the dash. तो द के बाद कोई प्लेस होगी जो कि आपको लिखनी होगी. तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी करना होता है लिस्टिंग में कि क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं that we are listing into the listening part later. Is there any question about it? कोई question है आपके माइंड में भी which is not clear? Yes, any question? Is this part clear to you? And Yes. ma'am, sometimes in audio we cannot hear the exact word. So how we can improve the listening? Like Okay. if the speaker is like word knife, for example, but I am Okay. predicting that it is like leaf. So how can I improve that? Okay. You need to understand in this case, thank you so much, Bakhtavar, for a very interesting question. In order to understand the right accent or word, you have to practice a lot. Okay. So start listening to different kind of podcasts from the beginning. Listening will be improved through speaking and listening to some in various contexts. So आप क्या करें अभी से, when you end up the class, before sleeping, listen to BBC podcast. रोजाना BBC podcast पे कोई ना कोई एक टॉक जरूर सुना करें. You don't have to attempt anything. You just have to listen what speakers are talking about. Okay, this would help you to understand and comprehend the information. तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने के लिए आप हर तरीके के स्पीकर को सुने, क्योंकि आइल्स में फिक्स नहीं है कि सारे आप इंग्लैंड वाले को ही सुने. एक्सेंट इंग्लैंड वाला भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, स्कॉटिश भी हो सकता है, ठीक है. तो डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, कोई सा भी डायलेक्ट हो सकता है, ठीक है. अमेरिकन एक्सेंट भी सुन सकते हैं आप. सो इन दैट केस you need to improve your listening skills by listening to BBC podcast. ठीक है, BBC podcast सुने ताकि आपको different accent सुनने की आदत हो. Because problem क्या है, our ears are not tuned to that particular style of listening or that style of utterance of speaking. तो हम pronunciation के used to ही नहीं है. जब हम used to नहीं होते तो वो हमें समझ नहीं आते हैं उससे क्या करा. ठीक है, जैसे मैं आपको इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल दूं. We say the word bus, 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 ठीक है. बट अगर यही आप नॉर्दर्न एक्सेंट सुनेंगे इंग्लैंड का, जो कि स्कॉटलैंड का एक्सेंट है, वो बस नहीं कहते, वो बूस कहते हैं. बूस, बूस इज कमिंग, ठीक है. वो मंडे नहीं कहते, दे प्रोनाउंस इट मुंडे. ओके, तो वहां पे आपको एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है. और ये सारे एक आध एक्सेंट आपको कहीं ना कहीं लिसनिंग में समझ में आएंगे. लिसनिंग थोड़ी तेज भी होती है, तो पेस उनका फास्ट होता है. तो सेक्शन 1 में इतना फास्ट नहीं होगा, 2 में थोड़ा ज्यादा होगा फास्ट, ठीक है. तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करें. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू ऑफ दीज ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनिंग, ठीक है. चलिए अब हम मूव करते हैं, नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड मैप. आज मैं बात करूंगी मैप्स पे. हम मैप्स कैसे सॉल्व करते हैं. Maps are quite easy. In maps, basically, we focus on direction. पहले तो हमें समझ लें कि लेबलिंग मैप में होता क्या है. In map or plan, you require to identify the different parts of map or plan by listening to and understanding a description or following direction. हम करते क्या है, आपको एक पिक्चर दे देते हैं, कोई प्लान होगा या वो कोई मैप होगा और आपसे कहा जा रहा होगा कि ब्लैंक्स मिसिंग है और आपको उसमें डायरेक्शन फॉलो करना है.
अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इफ आई एम आस्किंग यू टू फॉलो सर्टेन डायरेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर एक्सपेक्टिंग? जब आप कोई डायरेक्शन फॉलो करते हैं या किसी को भी डायरेक्शन देते हैं, कौन से वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं? एनी आइडिया अबाउट दैट? North, south, east, west, Okay, right, good. left. North, south. Very good. Very good. So we come up with direction of preposition. ठीक है? जैसे हम कह रहे हैं भाई go straight, take left, all right? Behind, beside. So we focus more on prepositions. हम किस पे फोकस करते हैं? Preposition पे फोकस करते हैं. तो plan और map किस तरह का होता है? इस तरह का होता है. Can you see it? This is about the map of the one of the test about the plan. ओके, तो एक फैक्ट्री का प्लान बता रहे हैं वो, रिवर साइड इंडस्ट्रियल विलेज. सो इंडस्ट्रियल विलेज का एक प्लान है. यू कैन सी देयर आर डिफरेंट प्लेसेस. फर्स्ट इज रोड, नाम मिसिंग है रोड का. यू आर एंट्रेंस, एंट्रेंस की लेफ्ट साइड पे यू कैन सी देयर इज अ प्लेस, नेम इज मिसिंग. Right side name is missing, left side another name. We can see the car park, yard in the middle, and everything has been divided in the half circle. ठीक है, तो जब आप इसको सुन रहे हैं तो स्पीकर कहेगा नाउ यू आर एट द एंट्रेंस, सी एट द बॉटम. सो रनिंग अलोंग द रिवर देयर इज अ डैश रोड. तो किसी रोड का नाम नहीं. रनिंग अलोंग बॉटम मीन हियर, बॉटम पे क्या है? ये वाला पार्ट है. जो भी रोड का नाम ले लिया आपको ये लिखना. ठीक है, देन दे वुड आस्क यू दैट यू कैन सी द कार पार्क, सी एट द एंट्रेंस. एंट्रेंस का मतलब आप यहाँ खड़े हो. सी एट द एंट्रेंस मीन यू आर हियर. सो एज स्पीकर इज डायरेक्टिंग यू, you have to move on according to her direction. So she would say, now on the right side of the car park, there's a dash. वो जो नाम ले रही है इसका आपको लिखना है. ठीक है, on the left side, on beside that, you can see the toilets. तो सिर्फ वो ब्लैंक को नहीं डिस्कस करेंगी, और जगहों को भी डिस्कस करेंगी जो कि साथ में मौजूद है. ठीक है, आपने क्या फॉलो करना है? आपने प्रपोजिशन पे फोकस करना है. इफ यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग प्रपोजिशन, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. बहुत आसान है इसको सॉल्व करना. तो क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, सो यू डोंट कंफ्यूज, जस्ट फर्स्ट अंडरलाइन द प्लेसेस दैट यू नीड टू बेसिकली राइट द इंफॉर्मेशन. एंड कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आपको लिखना भी है, डायरेक्शन भी फॉलो करनी होती है. जस्ट विजुअलाइज एज यू आर देयर, so you can easily picture that scenario. We can solve it by understanding these direction like inside, outside, left hand side, right hand side, okay, beyond, above, below. जितनी भी preposition of direction और position है, अगर ये समझ में आ जाती हैं तो हम आराम से इसको solve कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको उसी में घुमा रहे होते हैं. ठीक है, but remember this point, nothing is out of order. तो अगर 14 से स्टार्ट है तो 15 पे आएंगे, देन 16, 17, 18, 19, 20. तो कोई भी चीज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होती लिस्टिंग में. सब चीज वो लाइन से ही कहेंगी, लेकिन विद इन लाइन शी वुड डिस्कस अदर एस्पेक्ट एज वेल, जो साथ में प्लेसेस हैं. ठीक है, उसको भी वो डिस्कस करेंगी कि भाई यहाँ पे ऑन वन साइड यू कैन सी इन द मिडिल ग्राइंडिंग शॉप, ऑन वन साइड इज एन इंजन रूम एंड द अदर इज अ डैश. तो वो जो जगह बता रही है, you would write that in the blank. ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? No. अच्छा, other student, those who are still silent? Umaima, Hira, Hafsa, Gulfreen, Ma'am. Aisha. Yes, ma'am. Is it clear or is there any confusion? Ma'am. Clear? Okay. So now let's do a little bit test or practical before moving on to the task. Next one. I have shared this map with you in your group. Can you see that in WhatsApp group? यही मैप मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ. Can you open that map in your mobile phone? Yes, ma'am. Okay. I am playing this audio. Let's see what can you understand in today's class, just to know a fair idea about map or plan. ठीक है, प्लान अगर आपको लेवल करना है तो आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं आज क्लास में बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन.
Please let me know if the audio is clear to you. I'm playing it. Cambridge. Section 2. You'll hear a tour guide giving a talk about a museum centre. Oh, that's the history for you. If you'd like any more information, you can ask me some questions, or you can read further in our excellent guidebook. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Okay, let me know whether it's clear or not. Is audio clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's clear. You have time. Just read the map quickly. The map पढ़े क्या है? Road, entrance. So in exam, Then we, okay, yeah, first is road and the second is entrance. Then we go with 15 and 16. Good. Then Okay, then we have to pass the yard place and goes to the 17. Okay. Okay, 17, and then besides the 17, it's 18. Okay. And the opposite side is 19 and solve 3 passages. Okay. And then we do. And the last is 20. Okay, Left good. side. Good. So you just mark all the questions where you need to move Okay. on. Okay. Okay, ma'am. So you don't get Yes. confused. Okay. Now I'm playing it. Okay. Listen to that and try to No, it's solve. already numbering. Yeah, it's mentioned the number of So portion. that's fine. Okay. Thank you so much, Aisha. Something is there. Thank you, ma'am. So just in order to understand where the things are, just read the entire map. Read the other parts as well. So you may not get confused suddenly if the speaker names. I would like everyone kindly mute yourself so you can know, you may not have any distortion because others' mics are open. Turn off. So you may have problem in listening. Please turn off your mic. Mute yourself for a while. Thank you, Shamsa. All right, I'm starting. It is about to be played. There's a pause. Now listen and answer questions 14 to 20. Now I'm going to give you a plan of the site, and I'd just like to point out where everything is, and then you can take a look at everything for yourself. I've already pointed out the river, which is on the left, and of course, running along the bottom is Woodside Road. Got it? Okay, now we're standing at the entrance. See it at the bottom? And immediately to our right is the ticket office. You won't need that because you've got your group booking, but just past it are the toilets. Always good to know where they are. In front of us is the car park, as you can see, and to the left, by the entry gate, is the gift shop. That's where you can get copies of the guide, like this one here. Now, beyond the car park, all the buildings are arranged in a half circle with a yard in the middle. The big stone building at the top is the main workshop. That's where the furnace is and where all the metal was smelted and the tools were cast, as you'll be able to see. Now, in the top right-hand corner, that building with bigger windows is the showroom, where samples of all the tools that were made through the ages are on display. In the top left corner is the grinding shop, where the tools were sharpened and finished. And on one side of that, you can see the engine room, and on the other is the cafe, which isn't an antique, you'll be pleased to know, though they do serve very nice old-fashioned teas. The row of buildings you can see on the left
are the cottages. These were built for the workers towards the end of the 18th century, and they're still furnished from that period, so you can get a good idea of ordinary people's living conditions. Across the yard from them, you can see the stables, where the horses were kept for transporting the products. And the separate building in front of them is the works office, and that still has some of the old accounts on display. Right. If anyone wants a guided tour, then I'm starting at the engine room. If you'd like to come along this way, please, ladies and gentlemen. Okay. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. All right. Let's quickly discuss what have you understood in the first Yes. one. What was the name of the road? Any idea? Woodside. Woodside. Has everyone written Woodside or understood the same? Yes. 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 Okay. So this means that you are quite intelligent to understand the names. Good. So the first bar is Woodside. Now, since it's a name and we can see initials are capital, so W should be capital. Okay. Okay. W capital hoga. It's the name of the road. So you cannot write with Okay, ma'am. small letters. So keep this in mind. Your side. Okay. What would be on the left side? Okay. Ticket office. Ticket office. No. Left side is gift shop. No, I am asking the right Right side. side. Aisha. Ticket office. ठीक है? Right side is ticket office. Yes. Yes. I am asking first 15 because we will go by in order. We'll go in order. Okay. Sequence. Okay, ma'am. So it's the first, that is the ticket office. So T should be capital, office, O should be capital, because we can see the other initials are capital. All right, 16th. Gift shop. Gift shop. Good. Gift. Okay, on the top, what was the name of the building? Building the- name is workshop showroom. 17. Workshop. 17. Yeah, it was basically the main workshop. So on top, there's a main workshop. Showroom on 18. Showroom. 18 18 is showroom. This main workshop. Then we have showroom. Then they do have 19. Cafe. Cafe. And the And the last 20. one, Cottages. Cottages. okay. So rather than saying the thing, speaker describe row of the building. We can see the Yeah. rows. Okay. Cottages for the worker of that time. Yes. So this way speaker will speak in the other sides as well. Now, this is one part. Now, sometimes you get the, map where some options are also given. Can you see this one? And there are some letters. Can you see that map? Yes, ma'am. Okay, information. We have to. Yeah, we have to put the letters one. Yes, very good. You need to put the letter. तो यहाँ हमने क्या करना है? Yes. हमने यहाँ पे लेटर लिखने, नाम नहीं लिखने पूरे वो नाम Okay. बताते जाएंगे. ma'am. जहाँ पे एले है तो वो आपको जे लिखना है. If she's saying on the right side I, whatever the letter is, you need to follow that arrow and direction, and you need to write that letter rather than the entire name. We will do practice inshallah later in the classes. Now I'm moving to the another task, which is the most complicated from student side, and they find it difficult, which is called MCQs. MCQs Okay. students usually find
ट्रिकी, और वो कहते हैं मिस सब समझ में आ रहा था, एमसीक्यूज में मुश्किल होती है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा वाला पार्ट कहा था. ठीक है. सो मल्टीपल चॉइस इज वन एंड इट इज यूजुअली आस्क्ड इन सेक्शन 2, सेक्शन 3 एज वेल मोस्ट ऑफ द टाइम. सो एमसीक्यूज आपका पार्ट होते हैं लिस्टिंग का, इफ नॉट ऑल बट एटलीस्ट 2 सेक्शन में तो लाजमी होता है. सेक्शन 2 में लाजमी आपको मिलेंगे एमसीक्यूज हर लेसन में. सेक्शन 2, सेक्शन 3 you may find MCQs. Now in MCQs you have a question, okay, and there are options with 3 multiple choice. Now what do we do it in this part? You need to focus first as you get the question, save time. Agar aapne, if you are done with section 2 or let's say ye section 3 ka part hai, aap section 2 kar chuke and you have time and you know that my all answers are correct, so save those 30 seconds and move to this part. Quickly read the questions, title and question. तो पहले questions Okay. पढ़. जब भी हम question पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? We mark keywords. और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Andrew has worked at the hospital for 2 years, 3 years, 5 years. So Andrew worked hospitals for, तो duration याद रखना है कितने साल उसने काम किया है. Options गौर से पढ़ने चाहिए. ये तो छोटे हैं options. Sometimes options are lengthy in a form of sentence, phrases. So in that case it takes time. तो अब options को भी गौर से पढ़ें कि वो कौन से aspect की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे 3 ऑप्शन है. Speaker will talk about any one option. सबकी बात नहीं करेंगे. ठीक है. So you need to focus on the paraphrasing. जी, yes. But ma'am, sometimes they talk about all the options. So ask difficult to judge the right answer. बख्तावर, जो वो all options की बात करते हैं वो question को नहीं आंसर कर रहा होता. वो क्वेश्चन को नहीं आंसर कर होता है, वो स्पीकिंग का पार्ट जरूर होता है, लेकिन वो क्वेश्चन और को नहीं मैम और सॉरी टू इंटरप्ट, और ऐसे क्वेश्चंस वहां किए जाते हैं जहां नॉट गिवन दिया जाता है. अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक वो दे रहे हैं जो कि आपकी लिसनिंग जो ऑडियो में नहीं है या आपके रीडिंग की बात करें उसमें ना हो, तो उसके लिए फिर वो एक ऑप्शन देते हैं नॉट गिवन. नहीं, वो तो रीडिंग का है. आयशा, यू आर मिक्सिंग. वो आप यस नो नॉट गिवन मिक्स कर रही हैं. तो मैम क्या वो इसमें नहीं आ सकता? नॉट गिविंग का इसमें नहीं आ नहीं, सकता? नो 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 नो. ओके दैट इज ओके अनदर पार्ट. ये वो नहीं है. इट्स प्योरली ओके ओके मैम. एमसीक्यूज. एक डिस्ट्रैक्टर ओके जरूर होगा. एक ऐसा वीक ओके. डिस्ट्रैक्टर होता है हमेशा पेपर में कि वो या तो स्पीकर बात ही नहीं करता है उसकी. ठीक है. वो डिस्ट्रैक्टर जरूर मिलेगा, लेकिन बाकी 2 ऑप्शन क्लोज होते हैं, लेकिन एक ही राइट ऑप्शन होगा. जैसे मैं आपको मतलब ऐसे कि वो 3 साल से काम कर रहा था या अब नहीं कर रहा, मे बी नहीं. दिस विल बी हैपन. हाँ, see, Andrew has worked at the hospital for, so see, let me give you example. How would he come up with this point? He may say that I have been working for 5 years, all right, 2 years in a company as an assistant manager and 3 years in a hospital as an assistant controller, let's say. तो हॉस्पिटल का कितने साल का है? 3 साल का, तो वो ही लिखेंगे. 5 years उसने ओवरऑल का, लेकिन उसने हॉस्पिटल की बात नहीं की. हॉस्पिटल के लिए कितने साल बोले मैंने? 3 years. 3 years. ठीक है. आंसर ये वाला होगा. हालांकि मैंने सारे ऑप्शंस बोले 5B, 2B, 3B, 3B, लेकिन मेरा आंसर क्वेश्चन को कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 वाला. मैंने कहा 5 साल का. इट मस्ट बी ट्रिकी. हाँ, तो ट्रिकी होता है थोड़ा. कीवर्ड पे करें और देखें कीवर्ड कनेक्ट कैसे हो रहा है. अच्छा, एक और पॉइंट लिस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में कि फौरन ही नहीं आंसर मार्क करें, बिकॉज स्पीकर्स चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वो अपनी बात चेंज करो. जैसे उन्होंने एक बात की जो कि ऑप्शन में है, लेकिन नो नो आई थिंक इट वाज नॉट द पार्ट, द अनदर पार्ट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग. तो जब आप कीवर्ड मार्क कर रहे होते हैं तो आप एक तो पैराफ्रेजिंग देखें और दूसरा एस्पेक्ट देखें कि स्पीकर कहाँ पे अपनी बात चेंज कर रहा है. सो फोकस ऑन द कीवर्ड लाइक हाउएवर, ठीक है, नो आई डोंट थिंक, और वहां पे अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है. तो आपको थोड़ा सा फंक्शनल लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करनी पड़ती है लिस्टिंग में. ठीक है. जैसे जहां वो कह रहे हैं कि जब आंसर कर रहे हैं आप, मे बी समवेयर ही वुड से हाउएवर आई डिड नॉट choose to select the options but the another point or but the all answers. तो वो ऑप्शन कहा, लेकिन मैं कहा मैं ऑप्शन नहीं सेलेक्ट की, दूसरे आंसर्स पे मैंने फोकस किया. तो इसका मतलब है
वो प्रेफर किसको कर रहा है, दूसरे आंसर्स को। तो ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, डिस्ट्रैक्टर्स और अदर कनेक्टर्स, बट हाउ एवर, ये स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो। तो पहले पूरी बात सुने और उसके बाद आंसर मार्क करें आखिर में, ठीक है। जल्दी नहीं करें आंसर के, उसे पहली बात क्यों आपने मार्क कर लिया, तो वहां पे गलती होती है, ठीक है। लिसन द एंटायर पार्ट एंड देन द एंटायर पार्ट मीन एंटायर दिस पार्ट, ये नहीं कि आप पूरी लिस्टिंग सुने फिर आंसर करें, ये वाला पार्ट सुने, फिर जब वो पूरा बोल चुके उसके बाद आंसर करें। सिमिलरली वो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। सिंस इट्स अ कॉन्वर्सेशन, अभी कॉन्वर्सेशन फॉर्म में तो बातें भी हो रही होंगी बहुत सारी, कुछ एडिशनल पॉइंट भी होंगे। तो जैसे ही वो इस एस्पेक्ट पे आएगा, ड्यूरिंग द कोर्स एंड्रूज एम्प्लॉयर्स विल पे हिज फीस, लिविंग कॉस्ट, सैलरी। तो लेट्स से वो कह रहे हैं कि भाई इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, so obviously my employers will support me if I join this course, and they will support me to pay my fees, right? Or they will pay the half of the cost of the fees. अब उसने cost कहा, cost of the course, तो cost का क्या मतलब है, फीस। फीस का वर्ड एग्जैक्ट नहीं कह रहे हो, ठीक है। they will pay half of the cost of my course, ठीक है। तो बजाय फी के बदले उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, कॉस्ट, ठीक है। फी का वर्ड डायरेक्ट यूज नहीं किया। तो जो ऑप्शन है उसके भी वो सिनोनिम्स यूज कर रहे होते हैं। तो कीवर्ड आपने यहाँ मार्क करना होता है क्वेश्चन में, और फिर आखिर में आपने ऑप्शन में देखना होता है किसकी वो बात करें। पे की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयर कैसे पे करेंगे, एम्प्लॉयर में वो कहेगा बॉस, ठीक है, माय ऑफिस, मैनेजमेंट, एनीथिंग दैट ही विल टॉक अबाउट, ठीक है। क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, चलिए ma'am. अब छोटा Yes. सा प्रैक्टिकल करते हैं इसका क्लास में, तो थोड़ी सी चीजें और क्लैरिफाई हों। When inshallah join us in our classes, whoever will conduct, either Sarasib or me or anyone, so वहाँ पे फिर हम ऑडिटेड वे में पढ़ेंगे। Okay, let me share my screen with you. Hello. Yes, yes, I'm here. Give me a minute. मैम मुझे कुछ पूछना था कि कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रही मुझे। सुबह से क्लासेस तो जितना मैं ले सकती हूँ ले रही हूँ, मुझे कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रही कि एक दिन में हम तीनों मॉड्यूल्स करेंगे। No, you will go like that. There are 3 different classes. ठीक है? ओके We have 2-hour session. तो आपका क्या ओके होगा, ऑल्टरनेट होता है, एक दिन स्पीकिंग होती है, साथ ही में जैसे मैं राइटिंग करवाती हूँ, ठीक है, मैं ओके लिसनिंग करना करती हूँ। तो लेट्स से अगर आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिसनिंग है, 1 घंटा मेरे साथ लिसनिंग होगी, फिर 1 घंटा ओके आपकी स्पीकिंग होगी। तो जो स्पीकिंग में आपके स्लॉट्स डिवाइड होंगे, तो कुछ बच्चे स्पीकिंग के टीचर के साथ चले जाएंगे, एकेडमिक वाले जनरल ट्रेनिंग वाले रीडिंग ज्वाइन करेंगे। तो एक ओके 3 मैम, days यहाँ में 2 ये भी अलग से, यहाँ से एकेडमिक का भी अलग से, एकेडमिक के और टीचर्स वो होंगे और जनरल के। रीडिंग में अलग होता है आयशा, क्योंकि रीडिंग ओके बेस रीडिंग में करती यस, उनके है। हाँ जो वहाँ पे जनरल है स्प्लिट हो उनके जाता पैसेज छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। है। तो वो इसमें एक्चुअली ओके रीडिंग स्प्लिट होती है, तो रीडिंग में सर हसीब स्प्लिट करवाते हैं क्लास। और ओके उसमें क्या ओके होता है, मैम। पहले आप रीडिंग वाले सर को ज्वाइन करते हैं, उस स्लॉट में एकेडमिक वाले स्पीकिंग ले लेते हैं, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एकेडमिक वाले रीडिंग करेंगे और जनरल वाले स्पीकिंग लेंगे। तो क्लास हमारी इस तरह ओके डिवाइड होती है। राइटिंग में भी ओके आप ओके डिवाइड होंगे। जब लेटर राइटिंग का टास्क 1 करेंगे मेरे साथ, तो एक दिन आप लेटर राइटिंग करेंगे, ठीक है, एंड और देन ऑल्टरनेट वीक पे एकेडमिक वाले मेरे साथ टास्क 1 करेंगे। टास्क 2 में सब ओके मैम। बिकॉज सेम है यस सब, मैम, या सेम सेम। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो वी विल जस्ट मेक, लेट्स डू अ प्रैक्टिकल टुडे। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको कि एमसीक्यूज हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और it is about to appear. यस यस मैम। Okay, can you all see that? सेशन 3 Yes. क्वेश्चन Can you 21 to see the 22। file? Can you all see except Aisha?
other than Aisha? Bakhtavar, Manur, Kanza, Mema. Is it visible to all? Yes, ma'am. Okay. Now this is section 3 and we have questions from 21 to 22. अभी आगे जाके भी देखें, एक हमारे पास एक और आएगी मैचिंग 23 to 27 और फिर हमारे पास एक और सेक्शन आएगा इसी का बार ग्राफ. ठीक है, ये भी एमसीक्यूज ही टाइप का होता है जिसमें आपसे मैच कर रहे होते हैं ऑप्शंस को. अभी मैं मैचिंग पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी बात करूंगी एमसीक्यूज पे. सो आई एम प्लेइंग ओनली दिस पार्ट. Listen to that part and see what have you understood in this section. Okay. Right? Section 3. You'll hear Melanie, a student, talking to one of her lecturers about her studies. First, you have some time to look at questions 21 to 27. Just read 21 to 22 at the moment because I'm focusing on the MCQs part. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Excuse me, Dr. Johnson. May I speak to you for a minute? Sure, come in. I'm Melanie Griffin. I'm taking your course in population studies. Right. Well, Melanie, how can I help you? I'm having a bit of trouble with a second assignment, and it's due in 12 days. What sort of trouble are you having? Is the assignment question a problem? Well, that's part of the problem. I've been having trouble getting hold of the books. I've been to the library several times and all the books are out. Sounds like you should have started borrowing books a bit earlier. Well, I had a really big assignment due in for another course, and I've been spending all my time on that. And I thought... You might get an extension of time to finish your assignment for me? If that's possible, but I don't know... Well, yes, it is possible, but extensions are normally given only for medical or compassionate reasons. Otherwise, it's really a question of organizing your study. And we don't like giving extensions to students who simply didn't plan their work properly. What did you get for your first assignment? I got 87%. Yes, you did very well, indeed. So obviously you can produce good work. I don't think I'll need too much extra time, as long as I can get hold of some of the important references. Well, since you did so well in your first assignment, I'm prepared to give you an extra 2 weeks for this one. So that'll mean you'll need to submit it about a month from now. Oh, thank you. Okay. I'm stopping here because later, like speaker will talk about the other part. What have you understood in this one? The conversation started from the first point, all right, about who are the speakers, professor and the students. Okay. And Doctor? they are talking about assignments. Assignments. Okay. So situation is like a professor and the student, they were talking and Melanie had problem with submitting the assignment. So the first part, as the conversation started, she could not borrow any books from the library because the books had already been borrowed. Okay. What was the paraphrasing that she said? That the books had already been out. Okay. So rather than say borrowed, she used that sentence, or she uttered that the books, all the books were already out. The out कहने borrowed कहने एक ही बात है. Out का मतलब ये नहीं कि बाहर चली गई थी. Out there mean that people had already. And somebody has taken it. Yes, somebody had taken it. Okay. So the books had already been borrowed. Paraphrasing point क्या था? Books were already out. Okay. As she moved to the problem, but that's a part of the problem. Another problem that she couldn't complete the assignment. So Melanie says she has not started the assignment. क्या reason दिया उसने? What reason she gave? It was really a big assignment. A
big assignment. Okay, it was really a big assignment. Okay, any another? B. 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 All right, let's just mark, and then I will let you know whether you're correct or not. Okay, what was Ma'am, the reason? A, I think Okay, who says A? she was doing work for another course. Ma'am, Okay, ma'am, B. I But think she A also said correct that है. it was a really big assignment. So okay, she we are gave coming to that. reasons. Okay, no problem. We are coming that. Don't argue. Don't worry. Okay, we will see कहाँ आप लोग comprehension में गड़बड़ करते हैं. ठीक है, यहीं पे मैं आपको बात बताऊंगी. Now in this part, the first is he was working for another course. This is the right answer. I will tell you how. अच्छा मुझे इसका बताइए. What lecturer says the reasonable excuses for extension are for which part? Planning problem. It's a C. It's C, C. Personal illness and accident. Okay, very good. Now this is correct. Okay, now those who are saying it was a really big assignment, see what she says. Question पे focus करें. She had not started the assignment because assignment was big, or she was doing work for another course. Listen to that part carefully. इससे कहा क्या? Reasons. Otherwise, I thought you might get an assignment, you're in trouble with a second assignment, and it's due in 12 days. What sort of trouble are you having? Is the assignment question a problem? Well, that's part of the problem. I've been having trouble getting hold of the books. I've been to the library several times and all the books are out. Sounds like you should have started borrowing books a bit earlier. Well, I had a really big assignment due in for another course and I've been spending all my time on that. And I thought you might get an extension of time. What she said, I had a really big assignment for another course. for another course. ठीक है, उसे ये नहीं कहा कि जो assignment वो start करी वो big है. See the option. She could not start the assignment because that assignment that she was given was big. उसे ये नहीं कहा कि assignment big है. She said I had a really another big assignment that I'm doing for another course. So यहाँ क्या होगा? इसका मतलब है कि she was busy doing for another course, therefore she could not start assignment given by the lecturer. Clear? समझ में आते? तो यहाँ पर से क्या कहा? The answer is A. A. ठीक है? उसे ये नहीं कहा कि वो वाला assignment big है. She said that I had a really big assignment due in for another course. So due in for another course means that she was doing work for another course, therefore she can't start the assignment. Okay? Now here, Okay, ma'am. personal illness or accident के लिए क्या word use किया? Medical and compassionate reason. So medical Yeah, means personal illness. ठीक है? और compassionate में क्या आ जाएगा? Accident. इसके Accident. लिए paraphrasing क्या है? Medical. For personal illness and for accident, it can be compassionate. Compassion. Okay. Okay. हमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं. उन्होंने पैराफ्रेज क्या कहे? Synonyms कौन से यूज की? All right. Okay. Any question about MCQ so far? No, ma'am, it's clear. ठीक है. अच्छा, I'm just Yes. stopping here because I will continue tomorrow. That will be our third session of the orientation. और कल हम कुछ और टास्क पे बात करेंगे. Let me share my screen with you so you can see. We will be tomorrow talking about some another task which is called matching. ठीक है? MCQs में matching भी एक टाइप आती है. एक जगह आपको एक क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो चूज करने होते हैं. उसमें भी हम कैसे कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है? So tomorrow, inshallah, we will be discussing matching and double MCQs where you have more options. So how would you solve that? And inshallah, sentence completion also I will discuss in tomorrow's class. तो कल हम इस 3 पे बात करेंगे. Don't miss the class.
And inshallah, on Thursday, we have writing class for academics for task 2. So I would like you to be there because that's important for everyone, for academic and general training students. Thank you very much for your patience and participation in today's session. Is there any query so far, so forth that you haven't understood about listening session? You may ask me before leaving. कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है? मैम मुझे ये पूछना Yes. था कि एकेडमिक का जो है वो साथ साथ ही चलेगा, मतलब दोनों जर्नल और एकेडमिक ले सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं? क्या मतलब, मैं समझी नहीं आपकी बात. लाइक अभी आप एकेडमिक का तो नहीं पढ़ा रही ना, ये जो लिसनिंग का नहीं, है? ये एकेडमिक है ये आरिफा. अच्छा, ये एकेडमिक है. हाँ, ओके ठीक है, मैं ओके. बताऊँ. ओके, लेट मी टेल यू. जी जी लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, जी. एंड राइटिंग टास्क जो इज सिमिलर टू बुक, दोनों की एक ही आती है. लर्निंग पैटर्न में कोई फर्क नहीं. स्पीकिंग क्लास लिए आपकी अलग होती है, वी हैव माशाल्लाह मोर स्टूडेंट्स, तो हम स्प्लिट कर देते हैं ताकि हर एक की टर्न आए स्पीकिंग में. स्पीकिंग भी सबका सेम होता है, ठीक है. टेस्ट में कोई अलग नहीं है, कोई जनरल की अलग स्पीकिंग होती है, एकेडमिक की स्पीकिंग अलग होती है, टॉपिक सबके सेम ही होते हैं, ठीक है. हाँ, क्लास आपकी इसलिए अलग होगी क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, so everyone get a chance to practice in the class, therefore we split the session. Okay, लिस्टिंग सबकी एक है, तो जैसे अगर मैं ले रही हूँ पार्ट तो मैं सबकी एक साथ ही लूंगी लिस्टिंग, ठीक है. और इफ सर हसीब takes, ओके he will conduct the entire class listening. रीडिंग अलग होती है, जनरल ट्रेनिंग की अलग रीडिंग होती है, एग्जाम में भी एकेडमिक की अलग रीडिंग होती है. तो उसकी क्लासेस जब स्प्लिट होती है फिर आप जाते हैं सर हसीब के साथ, और उस टाइमिंग में कुछ बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे ऑल्टरनेट पे, और फिर नेक्स्ट वीक उनकी एकेडमिक की मेरे साथ राइटिंग होगी और जनरल ट्रेनिंग वालों की रीडिंग होगी. मैम सिंपल यही है कि 4 मॉड्यूल्स में से सिर्फ अगर हम बात करें तो रीडिंग में जो जनरल के हैं उनके पैसेजेस शॉर्ट होते रीडिंग हैं, और राइटिंग जी, रीडिंग और राइटिंग में. और उसके बाद जब हम बात करते हैं राइटिंग तो राइटिंग की, तो सेम है. 2 टास्क. नहीं हाँ, मैम, राइटिंग राइटिंग में भी ये होता है ना कि राइटिंग में जो फर्स्ट टास्क है उसमें उनको सिर्फ लेटर लिखना होता है जनरल हाँ के. हाँ जी जी जी. अगर आप तो सिर्फ उसकी बात करिए, लेंथ तो सेम ही होती है, लेंथ का कोई इशू नहीं है. तो वही ना, जो भी जितने भी स्टूडेंट इस टाइम हैं वो सिर्फ ये देखें कि दोनों में सिर्फ 2 चीजें हैं जो डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है. हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही है. रीडिंग और टास्क 1 डिफरेंट होता है आपका, राइटिंग. यस मैम. दैट्स इट. ओके, और ओके अदर मैम, साइड थैंक कोई डिफरेंस नहीं, राइट. You may join Okay. in class later, inshallah. Mr. Hasib, he has a session. All right, inshallah, see you tomorrow. Thank you very much. ओके मैम, थैंक यू. We will meet you tomorrow. Don't miss the class. कल मैं और strategies discuss करूंगी class में. Sir Hasib, I'm done with the session.